Good morning and welcome everyone. Welcome to the class. This is our YouTube free class provided by Unacademy, जहाँ पर हम रोज बात करते हैं टॉपिक्स ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन की। और आज उस क्लास में हम एक नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं। वी आर बिगनिंग टूवर्ड्स टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। एज यू कैन सी, आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है दैट इज जनरल कंसिडरेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, और यू कैन से जनरल कंसिडरेशंस इन टॉक्सिकोलॉजी। ओके, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स विच आर एसोसिएटेड व्हेन वी से टॉक्सिकोलॉजी और पॉइजनस सब्सटेंसेस इन इंडिया। किस तरीके से ड्रग्स की शेड्यूलिंग करी जाती है, डॉक्टर्स की ड्यूटी क्या होती है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट हु इज सपोजिटली कंज्यूम्ड अ पॉइजनस सब्सटेंस, एंड उसी के साथ में कुछ रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, एज यू नो दैट वी हैव बीन with each other for last 2 months or so, live every day on this channel, that is a YouTube channel। और हम लोग पिछले 2 महीने में बहुत सारी फोरेंसिक मेडिसिन के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एंड not only we have covered the topics in terms of forensic lectures, but we have covered the topics retrospectively also via doing MCQs on the subject। Okay, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, ताकि वो स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को बिल्कुल पहली बार देख रहे हों, जिन्होंने आज से पहले हमारा लेक्चर फॉलो नहीं किया, they have an idea about their teacher। So, my name is Dr. Sumit Tellewar. I am an educator at Unacademy right now. And after completing my MD in Forensic Medicine from Delhi University, I have been actively engaged in UG PG teaching, also in teaching mentorship of MD/MS aspirant students जो MBBS ख़त्म करने के बाद they are striving to achieve their goals in PG section। Okay, so I've had a very fulfilled and I would say a very privileged journey, because this journey has given me an access to be in constant contact with lots and lots of students throughout our country, and they have helped me build the information that I have today। बिकॉज उनके हेल्प के बिना जो क्वेश्चंस, जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह जाती। एंड वो ही एक्सपीरियंस लेकर के आज मैं आपके सामने हूँ टूवर्ड्स हेल्पिंग यू आउट टू फुलफिल योर गोल्स इन अपकमिंग नीट पीजी एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके। सो आज के टॉपिक को लेकर के इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, you need to contact regarding that, please do not hesitate to contact me at Telegram app। उसके लिए आपको फ़ोन पे Telegram app डाउनलोड करना होगा, which is a very easy process, and then you need to follow the link which is livedaily.me/neetpg, and your queries or maybe your suggestions can be taken by me। ये जो इंटरफेस है जिस पे अभी हम बैठे हैं, दिस अपॉर्चुनिटी टू बोथ ऑफ अस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय Unacademy। Unacademy happens to be the biggest, the largest and the best platform right now available in our country for preparation of multiple entrance examinations जो हमारी कंट्री में होते हैं। नीट पीजी एक बहुत ही बढ़िया Unacademy का पोर्टल है, और Unacademy के मल्टीपल बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, दैट इज Unacademy टेंड्स टू हैव मल्टीपल टीचर्स
for single subject. Thus, a student is never bound to follow a single teacher. I'm not saying कि कोई एक टीचर अच्छा नहीं होता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ हर टीचर का एक अपना तरीका होता है किसी कॉन्सेप्ट को समझाने का, और हर स्टूडेंट का अपना एक तरीका होता है किसी कॉन्सेप्ट को समझने का. सो अनअकैडमी के पास ऐसे मौके मल्टीपल हैं जहाँ पर आप मल्टीपल टीचर्स फॉलो कर सकते हो. यू नेवर नो किस टीचर का कौन सा समझाया हुआ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गेन कर जाए एंट्री. ये प्रिविलेज आपको मिलती है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में, जहाँ पर लाइव क्लासेस है, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं एजुकेटर के साथ. लाइव क्लासेस में पोल्स हैं टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस MCQs रियल टाइम. ओके, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस सो दैट आप कॉन्स्टेंटली अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर पाओ. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट अनक्लियर्ड ना रह जाए. एंड इफ यू वांट टू हैव अ लुक दैट हाउ डज एन अनअकैडमी क्लास वर्क, आप देख सकते हैं अनअकैडमी के पोर्टल पे स्पेशल क्लासेस विच आर एब्सोल्युटली फ्री. ये स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे ही डिजाइंड हैं, एंड दे विल गिव यू अ वेरी वेरी लवली प्रीव्यू कि अनअकैडमी की क्लासरूम किस तरीके से फंक्शन करती है. स्पेशल क्लासेस देखिए. माय नेक्स्ट अपकमिंग स्पेशल क्लास इज 2 days फ्रॉम नाउ, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें हम बात करने वाले हैं MCQ बेस्ड टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन की, पिक्चर बेस्ड टॉक्सिकोलॉजी की क्वेश्चंस की. ओके, ये सब देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आप अपने आप को नहीं रोकोगे टुवर्ड्स सब्सक्राइबिंग फॉर प्लस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी. सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखिएगा, टेक सब्सक्रिप्शन फॉर 12 months और 24 months, बिकॉज बल्क सब्सक्रिप्शन है. आप कमिट होते हो, और एक बारी आप कमिट हो जाते हो, देन टीचर्स कैन वर्क कॉन्स्टेंटली विद यू alongside so that you can crack your NEET PG एग्जामिनेशन. सब्सक्रिप्शन लेते समय जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज यूज माई रेफरल कोड विच इज DRSUMITLIVE, डॉक्टर सुमित लाइव, और ये रेफरल कोड यूज करके आप ले सकते हो 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट. ठीक है, इतना सिंपल है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेना और अपनी नीट पीजी की तैयारी को आगे बढ़ाना. चलिए आज की अपनी क्लास चालू करते हैं. एज आई सेड, आज की क्लास है टॉक्सिकोलॉजी के जनरल कंसिडरेशंस. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे आर सम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. याद रखिएगा, there is something called as Drugs and Cosmetic Act which came to India in 1940. Okay, and Drugs and Cosmetic Act के amended rules which came in India in 1945. उसी रूल्स के तहत हमारे यहाँ पर जो ड्रग्स हैं और जो मेडिकेशंस हैं, they have been categorized into various schedules that you can see on the board right now. And उन शेड्यूल्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस आर शेड्यूल सी. शेड्यूल सी includes the name of biological and special products. So all those drugs or all those products which have a biological origin, or they are special products which are used for treatment as drugs, इन सभी को शेड्यूल सी में जगह दी जाती है. देन देयर इज शेड्यूल E1. शेड्यूल E1 कंटेन्स ऑल दी पॉइजनस सब्सटेंसेस. सो वो ड्रग्स
वो मेडिकेशंस जो कि पॉइजनस सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आती हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, दे विल बी रजिस्टर्ड इन शेड्यूल E1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। सो ये याद रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है, ठीक है। देयर कुड बी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, दैट पॉइजनस सब्सटेंसेस आर रजिस्टर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल? द आंसर वुड बी शेड्यूल E1. Then schedule F contains the names of all the vaccines, antisera and diagnostic antigens. So microbiological assays में, biochemistry के assays में, pathology के कुछ investigative assays में हम जहाँ पर बहुत सारे diagnostic antigens यूज़ करते हैं, हम एंटीसीरा यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट, हम वैक्सीन्स यूज़ करते हैं फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम और वैक्सीन्स अगेंस्ट सो मैनी अदर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। ये सारी वैक्सीन्स जो हैं वो शेड्यूल F में रजिस्टर की जाती हैं। शेड्यूल F ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945. देन शेड्यूल G contains drugs to be taken under medical supervision. Okay, so all those drugs जो कि मेडिकल सुपरविजन में ही देनी है, उनकी कैटेगराइजेशन है शेड्यूल G के अंदर। शेड्यूल H contains names of drugs which are to be given only on prescription, यानी कि ओवर द काउंटर आप नहीं दे सकते। ड्रग्स ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स ओवर द काउंटर सेल नॉट अलाउड। ओके, तो शेड्यूल H में उन दवाइयों के नाम होते हैं जिनकी ओवर द काउंटर सेल अलाउड नहीं होती है। एंड देन another important schedule is schedule J, where drugs are listed उन डिसीजेस के लिए जिनके क्योर के लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता, लाइक HIV. ओके, सो ऑल दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर क्योरिंग such kind of diseases which are not to be advertised, these drug names are not to be advertised, वो ड्रग्स आती हैं शेड्यूल J की क्लासिफिकेशन में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ ड्रग्स। इसमें अगर आप देखोगे, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस आर शेड्यूल E1 बिकॉज पॉइजनस सब्सटेंसेस इनमें लेबल किए जाते हैं। देन शेड्यूल H contains the list of all those drugs which are not to be sold over the counter, and of course schedule G, where names of those drugs are included which are to be taken under medical supervision only. Okay, चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स and Psychotropic Substance Act. Okay, as we are talking about toxicology, then all students should remember the abbreviated form of this act, which is called as Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. This act in India controls the कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, स्टोरेज एंड यूजेज। ओके, सभी एरियाज को, कल्टीवेशन को भी, प्रोडक्शन को भी, मार्केटिंग को भी, स्टोरेज को भी, यूजेज को भी कवर करती है अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस एक्ट में सारी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को इंक्लूड किया गया है। दिस एक्ट कंटेन्स अबाउट 77 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस दैट आर कवर्ड इन द एक्ट इन इंडिया, एंड दिस एक्ट
causes prohibition of any illegal cultivation, production, marketing, distribution, storage or usage of narcotic drugs or psychotropic substances which are listed in the act. यानी कि ये एक्ट इंडिया में होने के बाद नार्कोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का कोई भी इलीगल ना तो प्रोडक्शन हो सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ना ही उसका स्टोरेज हो सकता है, ना ही उसका इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है. सो अभी हम एक्ट के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे. वी मे जस्ट टेक इट अप इन वन ऑफ आवर सेशंस जहां पर हम सिर्फ एनडीपीएस एक्ट की बात करेंगे. राइट नाउ आई वांट यू टू रिमेंबर that in India we have an act which controls all the narcotics and psychotropic substance called as NDPS Act. This act came into our country in 1985. Okay, now let's see medico-legal aspect of poisoning. And when we are talking about medico-legal aspect of poisoning, it's important to see what are the important IPCs which are related to poisoning in India. So अगर हम इन IPCs की लिस्ट देखें तो हमें दिखाई देता है सबसे पहले important IPC, that is section 85 of IPC. And what does this section say? It talks about involuntary intoxication, and it says that if a person has been intoxicated involuntarily, that person is not responsible for his acts. कहने का मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल लेके कहें, that let's consider that there is a person who has gone to a party where he has been provided alcohol mixed into some other drink involuntarily. He did not want to have it. Or if there is a person who has been intoxicated forcibly and then he is let go of, and under the intoxicating effects of whatever compound that has been given to him forcibly, he commits a crime or he causes an act which may lead to a crime, then he is not responsible for it. तो ये बेनिफिट दिया है सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी में. अगर कोई आदमी इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेट हुआ है और उससे कोई क्राइम हो जाता है तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता. बट इन द कोर्ट ऑफ लॉ ही हैज टू प्रूव दैट ही वाज इंटॉक्सिकेटेड इनवॉलेंटरीली. इट वाज नॉट हिज वॉलेंटरी कंजप्शन. ओके. Then next is section 86 of IPC itself, जो इससे अगला IPC section है. This talks about voluntary intoxication. यानी कि there is a person who has consumed some kind of an intoxicating drug voluntarily. This person is responsible for his act. He will be held responsible. So if there is a voluntary drunken driving, let's say there is a person who has consumed alcohol and after consumption, which has been his voluntary act, he is driving the car and he meets with an accident where he ends up hurting or causing damage to any other person or any other's property, he will be held responsible for that because he has consumed the intoxicating substance voluntarily. Okay, so section 85 and 86 of IPC एक दूसरे के mirror images ही हैं. 85 talks about involuntary intoxication and 86 talks about voluntary consumption. Okay, then section 274 of IPC, ये भी कुछ IPC के sections हैं जो किसी ना किसी adulteration या poisoning के साथ में लिंक्ड है. 274 about adulteration of drugs. Anybody guilty of adultering drugs, there is an imprisonment of 6 months which is available to them. Then section 275 of IPC,
anybody involved in sale of adulterated drugs, again it attracts up imprisonment of up to 6 months. So ड्रग्स का अडल्ट्रेशन करना या फिर अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को बेचना, दोनों ही क्राइम है 275 और 276 आईपीसी में। दोनों के लिए ही 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 276 विच इज द नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ ए ड्रग डिफरेंट एज अ डिफरेंट ड्रग, यानी कि आप किसी और दवाई का नाम बता करके कुछ और बेच रहे हो। ओके, एनीबडी गिल्टी ऑफ डूइंग दैट, 6 months of imprisonment is also available in 276. So 274, 275, 276 तीनों में ही 6 महीने तक की imprisonment की सजा है। 277 which is fouling of any public spring or reservoir, यानी कि अगर आप किसी पब्लिक स्प्रिंग को या फिर किसी पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर को फाउल कर रहे हो, उसमें भी 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट की सजा है। दिस काइंड ऑफ आईपीसी पर्टिकुलरली इन रेफरेंस टू 277 हमने जो अभी देखा, दे बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल और बिग फैक्ट्री सेटअप्स, है ना। छोटी या बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनका जो फैक्ट्री का ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, many a times these kind of wastes are dumped into nearby water, nearby sea, nearby lake or nearby river, and these are the sources of public water. They are called as reservoirs और public water का सोर्स होता है जहाँ से पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये जो वेस्ट्स है, दे में पोल्यूट दी पब्लिक वाटर, दे में कॉज दी वाटर टू बी इंटॉक्सिकेटिंग। उनके लिए ये आईपीसी मौजूद है। नॉट टू से कि अगर कोई विलफुली जाकर के खुद भी करे, उसकी कोई फैक्ट्री ना हो, तो उसे नहीं होगी सज़ा, उसे भी होगी सज़ा। द आइडिया इज दैट 277 इज अवेलेबल for fouling of public spring or reservoir. Then 288 of IPC is punishment for making atmosphere noxious to health, and this may involve ₹500 fine. Okay, so toxicology की जब हम बात करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ट्रीटमेंट की तरफ नहीं देखना। We are not talking about what are the important principles of treatment in cases of intoxication. Of course, वो भी डॉक्टर का एक most important area है, but we need to be abreast about what are the prevailing acts, what are the prevailing legal methodologies, what are the prevailing laws, and what are the important IPCs which are associated, and this is all part of medical jurisprudence. Medical jurisprudence is डॉक्टर को लॉ की नॉलेज होना, ताकि वो सोसाइटी में लीगल बाउंड्रीज के अंदर प्रैक्टिस कर पाए। ओके, चलिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल jurisprudence, तो फिर अब हम देखते हैं व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर इन ए केस of poisoning. The most important and the simplest thing that comes into our mind when we talk about duties of a doctor in a case of poisoning is कि हमें उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी होगी, which is basically the medical duty that a doctor has to perform. And this is true, a doctor has to perform his medical duty, and that is to treat the patient to the best of his clinical acumen, maybe alone, maybe as a combination team, जैसे भी हम ये कहना चाहें। But then in cases of poisoning, there is always another associated parallel duty that a doctor has to perform. It's not an option, it's not a choice.
ये भी डॉक्टर को करनी है, एंड दैट इज द डॉक्टर हैज टू परफॉर्म हिज लीगल ड्यूटीज ऑल्सो. एंड डॉक्टर की क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? वन इज इंफॉर्मेशन टू पुलिस. ओके, डॉक्टर को as soon as he gets the information or as soon as he sees a patient which seems to be under the grip of a poisonous substance, has to register the case as a medico-legal case. So information to police is registering the case as a medico-legal case. The moment you register the case as a medico-legal case, an information has to be provided to the police, because you will be taking care of the medical aspect and police will be involved as informed by you. So there is an associated legal aspect to the case also. Okay, then second thing, so this is the first thing that a doctor has to do. The second thing is preservation of the evidence. A doctor has to preserve the evidence that may be helpful later on if a legal case is built upon his information. So इस preservation में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? You may be needed to preserve clothes. हो सकता है उसके कपड़ों में कुछ intoxicating substances हों तो आपको उसके कपड़े preserve करने पड़ सकते हैं. You may be needed to preserve vomitus. अगर कोई patient vomit कर रहा है, there could be a possibility that he has consumed an intoxicating substance, and that may be present in the secretions from the stomach or any other relevant secretion. Okay, then we may be needed to preserve urine, blood, particularly in cases of alcohol intoxication. हो सकता है आपको वो preserve करना पड़ जाए as a sample. Okay, we may be needed to preserve gastric lavage sample. Okay, so अगर आपने उसकी ट्रीटमेंट के लिए गैस्ट्रिक लवाज किया है, अभी हम आगे देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज गैस्ट्रिक लवाज, then you may need to preserve the gastric lavage sample as an evidence of what has been taken out from his stomach. And we may be preserving any other substance which has been found with the patient. हो सकता है उसकी क्लोथिंग में कोई सब्सटेंस मिल जाए आपको. देयर कुड बी अ बॉटल ऑफ एम्प्टी ड्रग, मे बी कोई इंजेक्शन मिल जाए आपको बिकॉज अ पर्टिकुलर ड्रग हैज़ बीन इंजेक्टेड इनटू हिज बॉडी, और एनी अदर सब्सटेंस दैट मे रिलेट. तो वो भी आपको डिस्कार्ड नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू प्रिजर्व इट. ओके, एंड ऑल द प्रिजर्वेशंस हैव टू बी हैंडेड ओवर to the police officer. Okay, then one more thing that the doctor may be needed to do, which is important in cases of poisoning patients, is arranging for dying declaration. Okay, very very important thing which should always be on the back of the mind of a doctor.
डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में हम बहुत पहले अपने ओपनिंग चैप्टर में बात कर चुके हैं. डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय अ पर्सन who is assumed to be dying and he may want to declare something about his death. Ideally, a dying declaration should be recorded by a magistrate, and if there is no time to call a magistrate, then anybody can take it. Police can take it, a doctor can take it if the person is dying in the hospital. So this concept should be on the back of the mind of a doctor, that if he is seeing a patient who is being poisoned, it may be a case of an accidental poisoning or suicidal poisoning or a homicidal attempt, then there is high probability that patient may die, because lots of poisons do act very rapidly. And डॉक्टर को ट्रीटमेंट के साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है उसे डाइंग डिक्लेरेशन की अरेंजमेंट करनी पड़े. ठीक है. Then another important thing that a doctor may be needed to do is information to public health advisory, particularly if he is witnessing a case of any kind of epidemic intoxication. जैसे कि हमने अभी इससे पिछले स्लाइड में बात किया था, IPC है अवेलेबल 277 of anybody polluting any public reservoir. So if doctor is constantly getting kind of cases of a particular intoxication in a local community, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कोई पब्लिक हेल्थ की मिनी एपिडेमिक का ब्रेक हो रहा हो. So it becomes the responsibility of the doctor to inform the public health advisory, a government body who can take care of whatever is needed to be done. Okay, so when we talk about duties of a doctor in cases of poisoning, it's not only related to the treatment of the patient, it also is related to fulfilling the legal responsibility of the doctors also. So legal responsibilities में हमने देखा ये कुछ 4-5 बड़े अहम पॉइंट्स हैं. Informing the police, preservation of evidence, arrangement for dying declaration, and any information if required to be given to public health advisory. Okay, चलिए अब देखते हैं in cases of a patient who is intoxicated, if a doctor has to start the treatment, what are the general principles of management. यानी कि आप एक इंटॉक्सिकेटेड पेशेंट की ट्रीटमेंट किन जनरल प्रिंसिपल्स पे करते हो. द फर्स्ट थिंग इज immediate reaction. So once you encounter a patient, what is the first thing that you always want to do in cases of any emergency? So intoxication or poisonous patient भी एक emergency है. The immediate reaction is resuscitation. आपको उसे resuscitate करना है. और resuscitation के golden rules क्या होते हैं? A, B, C. A is airway, B is breathing, and C is circulation. Okay, airway, breathing, circulation. ठीक है, ये तो किसी भी इमरजेंसी का गोल्डन रूल है, तो वही हमें पॉइजन की इमरजेंसी में फॉलो करना है. The second thing that a doctor should now attempt to do is removal of unabsorbed poison. तो किस तरीके से he can work in a way so that whatever poison जो अभी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है हम उसको हटा दें ताकि और फर्दर एब्जॉर्प्शन रुक जाए. ठीक है, तो अगर इनहेलेंट पॉइजनिंग है, few methods of removal will be to take the person to fresh air so that the poison can be washed out from the lungs,
or you may be required to clear air passages. Okay, if it is an injected poison, then there could be attempt to removal of the sting. If it is particularly being injected by any kind of bee wasp bite, तो sting हटाने से हो जाएगा, या फिर causing local vasoconstriction so that the spread is delayed. Then third is, if it is a contact poison, we can attempt skin wash or eye wash or any other mucous membrane जिसकी वॉशिंग से लेकर हम क्या करें कि उस एरिया से उसका एब्जॉर्प्शन रोक दें. If it is an ingested kind of a poison, then further absorption can be delayed, or the absorption can be removed by causing emesis, by doing gastric lavage or whole bowel irrigation kind of techniques. Okay, so हमने क्या देखा? The idea is, once you have resuscitated the patient and you know that patient now is kind of stabilized, आपको जो फटाफट अटेम्प्ट करना है वो ये है कि फर्दर एब्जॉर्प्शन को रोको. जिसके लिए अगर इनहेलेंट है तो फ्रेश एयर में कोशिश करो, इंजेक्टेड है तो रिमूवल ऑफ स्टिंग या वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करना है, कॉन्टैक्ट है तो वॉशिंग कर दो बॉडी की, इंजेस्टेड है तो बाहर निकालो वाया वॉमिटिंग और बाउल इरिगेशन और अ प्रोसेस कॉल्ड एज gastric lavage. Okay, now as we are talking about gastric lavage is one of the very important fundamental procedure in treatment of poisoning patients. एक नज़र मारते हैं gastric lavage किस चीज से किया जाता है. So if you look at the tube which is present in the picture right now, this tube which is called as the Ewald's tube, okay, which is called as the Ewald's tube. This tube is used for gastric lavage, and if you look at this tube, this is an orange color tube, and it is made of rubber. Okay, so contrary to common belief कि हमें अगर गैस्ट्रिक लवाज करना होता है तो हम राइल्स ट्यूब यूज करते हैं. राइल्स ट्यूब बेसिकली फीडिंग ट्यूब होती है. सर्जिकल पेशेंट्स में या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में उसे फीडिंग के लिए यूज किया जाता है. बट अगर जरूरत पड़े और यूज करना पड़े तो वी कैन यूज राइल्स ट्यूब फॉर टेकिंग आउट मटेरियल फ्रॉम द स्टमक ऑल्सो. दैट इज द गैस्ट्रिक लवाज. गैस्ट्रिक लवाज इज वॉशिंग द स्टमक. ओके, बट उसके लिए जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं ईवाल्ड्स ट्यूब, which is a orange color tube made up of rubber. Standard length is 1.5 meters और इसको हम ओरोगैस्ट्रिक रूट से डालते हैं. इट्स एन ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब. Okay, so once it reaches in the stomach, the lavage fluid is poured into the funnel of the tube, which takes the liquid into the stomach, and then whatever content is there in the stomach is taken out from the tube. फिर से उसको डालते हैं, फिर निकालते हैं. So basically बार बार प्रोसेस करते हैं जिससे स्टमक की वॉशिंग हो जाए. And if there is any product which is in the stomach or lining the stomach wall, they can be washed out ताकि उनकी further absorption ना हो. That is the idea of doing gastric lavage via orogastric Ewald's tube. But इस प्रोसेस को करने के कुछ अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट कोमाटोज है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि हो सकता है वो एस्पिरेट कर जाए. तो उस समय आपको कव्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी है.
कफिंग जो है वो बचा लेगी एस्पिरेशन को, तब कर लो। इफ द पेशेंट इज हैज कम टू द इमरजेंसी हैविंग एपिलेप्सी, तब कैसे करोगे? बिकॉज ही विल बी हैविंग कन्वर्जन्स, तो पहले उसके कन्वर्जन सबसाइड कर दो, गिव हिम एंटी एपिलेप्टिक्स और सिडेटिव्स एंड देन उसको प्रिपेयर करके गैस्ट्रिक लवाज प्रोसेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे गैस्ट्रिक लवाज को ना करने के रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, बट अगर हम एक गैस्ट्रिक लवाज का कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें विच इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डूइंग गैस्ट्रिक लवाज, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग। Sulfuric acid poisoning is an absolute contraindication for not conducting gastric lavage. Very, very important information. Okay, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के इनटेक की हिस्ट्री है तो हमें गैस्ट्रिक लवाज बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड वर्क्स ऑन दी linings of the stomach, that is the mucosal lining, and it thins the stomach mucosa को पतला करता है। So there is always a danger of perforation, और अगर perforation अभी तक नहीं हुआ है, we may perforate the stomach wall by doing gastric lavage. Thus, sorry, in sulfuric acid intoxication, gastric lavage is absolutely contraindicated. Okay, then there are certain special gastric lavages which are done for certain important conditions of intoxication, like freshly prepared hydrated ferric oxide solution is used for conducting gastric lavage in cases of acute arsenic poisoning, and a copper sulfate solution, it is used as an antidotal gastric lavage in cases of inorganic phosphorus poisoning. Okay, तो गैस्ट्रिक लवाज एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। गैस्ट्रिक लवाज की अपनी कुछ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, और गैस्ट्रिक लवाज एज एन एंटीडोट भी यूज किया जाता है, एज वी हैव सीन इन दीज टू एग्जाम्पल्स, इन आर्सेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस की पॉइजनिंग में। ओके, चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें हमने देखा इमीडिएट मैनेजमेंट, एंड स्टेप 2 इज रिमूवल ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड पॉइजन, देन स्टेप 3 इज अटेम्प्टिंग इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो ऑलरेडी अब्सॉर्ब हो चुका है उसको क्या हम किसी तरीके से फोर्स कर सकते हैं, सो दैट द एक्सक्रीशन इज इंक्रीज्ड। द वेरियस मेथडोलॉजीज में बी यूजिंग ऑफ डायफोरेटिक्स, particularly helpful in cases of alcohol, antipyretics, salicylates kind of poisoning. Then enhanced renal excretion could be tried of those drugs or poisons which have predominantly renal excretory pathway. That can be done by either alkalizing the urine or acidification of urine. So urine की alkalization या acidification attempt करी जा सकती है. Then hemodialysis. Now this is an important area, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन से ऐसे पॉइजन हैं जिनको हीमोडायलिसिस से हम उनका एक्सक्रीशन बढ़ा सकते हैं, या हीमोडायलिसिस करना उन केसेस में इम्पॉर्टेंट रहता है, एंड द निमोनिक फॉर दैट इज ब्लास्ट. सो याद रखिएगा ब्लास्ट.
is the mnemonic for that. B for barbiturates. Okay. Then L for lithium. Then A for alcohol. S for salicylate. And T for theophylline. Blast. B for barbiturate, L for lithium, A for alcohol, then S for salicylates and T for theophylline. ये 5 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका हीमोडायलिसिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है. ओके. देन peritoneal dialysis can be attempted in certain cases and hemoperfusions can be done. So these are various methodologies by which there could be an increased excretion from the body, okay, of all the compounds which has already been absorbed. Then fourth would be administration of antidote. Okay. बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके स्पेसिफिक एंटीडोट्स होते हैं and they are extremely helpful in acute poisoning. The examples are atropine in cases of organophosphorus poisoning, physostigmine in cases of datura poisoning, naloxone in cases of opioid poisonings, calcium gluconate in cases of oxalic acid poisoning, and lavage with freshly prepared ferric oxide solution in cases of arsenic poisoning, जैसा अभी हमने पहले भी देखा था. Then lavage with copper sulfate solution in phosphorus poisoning. Okay. And fifth would be any adjunctive or symptomatic therapy that needs to be given. So हमने क्या देखा? Whenever you encounter a patient with alleged history of intoxication, the first thing you do is immediate resuscitation, followed by attempting to prevent any further absorption, followed by an attempt to increase the excretion of already absorbed poison, then trying to give antidote wherever an antidote is available, and fifth is giving him supportive therapy. जहाँ crystalloid की ज़रूरत है, जहाँ any kind of ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जहाँ पर किसी और सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत है, आप वो सपोर्टिव थेरेपीज पेशेंट को दोगे. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ केस ऑफ पॉइजनिंग. ओके. तो आज हमने देखा अपने टॉपिक में कि किस तरीके से डॉक्टर इज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट ऑफ ए केस ऑफ पॉइजनिंग. Not only a doctor has to know the basic principles of management, the doctor is also responsible for helping the law in important preservations in cases of intoxication. और वो preservations क्यों करने होते हैं? Because every case of intoxication is a medico-legal case. It could be that the intoxication or poisoning was accidental. It could be that it was self-induced, so it becomes suicidal, but then you can never rule out any homicidal attempt. Okay. और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लॉ को हेल्प करें by preserving whatever and all evidences that we can from a case of an alleged poisoning. Okay. चलिए जी, आज अपनी क्लास में हमने इतना किया. We've started to talk about toxicology. In the coming times, we are going to have lots and lots of lectures and sessions on toxicology, where we will talk about various poisonous substances in India, various kinds of intoxications that happen in India. Agricultural poisoning है, corrosives है. We'll talk about heavy metal poisonings, industrial occupational poisonings. We'll talk about accidental poisonings that happen with vegetable substances. We'll talk about deliriant substances, alcohol, dhatura. बहुत सारे vegetable origins के poison हैं. और rural setups में ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो modern setups में नहीं मिलती. So हम
उस सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को भी देखेंगे, ठीक है। चाहे रूरल सेटअप हो चाहे मॉडर्न सेटअप हो, पेशेंट ऑलवेज लैंड्स अप with intoxication unfortunately into emergencies of hospital, and who is there to take care of the medical and the legal requirements of the patient? The person concerned is the doctor. Okay, so doctor हमारे हमेशा center of attention में रहेगा। आज की क्लास को लेकर के if you have any kind of query, do talk to me at Telegram app. Follow this link, which is livedaily.me/neetpg, and your queries or suggestions can bounce towards me. Remember, the interface on which we are sitting is provided by Unacademy, इस free YouTube channel पे हम हैं, और Unacademy का नीट पीजी के लिए एक सब्सक्राइब्ड पोर्टल है, विच इज प्लस सेक्शन ऑफ अनअकैडमी फॉर नीट पीजी। नीट पीजी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस समय हम बात कर रहे हैं उन डॉक्टर्स की हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नीट पीजी एग्जामिनेशंस। ओके, अनअकैडमी के प्लस सेक्शन में वेयर you are prepared for upcoming NEET PG examinations, there are live classes, there are interactive classes with teachers with live polls, so that each student practices repeatedly of MCQs and he goes through that pressure which he experiences during his D-day of exam. The more you are used to that pressure, the more likelihood कि एग्जाम डे के दिन आप कॉन्फिडेंट होगे, एंड दैट हैपन्स लाइव पोल्स में, जो अनअकैडमी के प्लस सेक्शंस की क्लासेस में एजुकेटर लाइव करते हैं आपके साथ में ड्यूरिंग अ सेशन। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, ताकि सारे सब्जेक्ट्स की बराबर प्रिपरेशन होती रहे हमारी। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ताकि कोई भी स्टूडेंट का डाउट अनक्लियर ना रह जाए, एंड डाउट क्लियरिंग ऑल्सो हैपन्स लाइव। ओके, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो स्पेशल क्लासेस में, जो कि अनअकैडमी के पोर्टल पे हैं एब्सोल्युटली फ्री। स्पेशल क्लास देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी का ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, और अगर आप फ़ोन में नहीं करना चाहते, यू यूज़ डेस्कटॉप और लैपटॉप, you can go to the Unacademy site and create an ID for you, which takes about 1 minute, and then you can start watching special classes. Okay, special classes में आपको दिखाई देगा कि प्लस सेक्शन का क्लासरूम किस तरीके से होता है, कैसे फंक्शन करता है, एंड वंस यू हैव सीन ऑल द बेनिफिट्स जो कि आपको प्लस स्पेशल क्लास में क्लियरली दिखाई देंगी, you can be a part of a live special class also. Then you can go on and register yourself for Unacademy NEET PG subscription. उसके लिए आपको क्या करना है, you need to download and install Unacademy learning app in your phone, and again अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहते हो, you can do it on your desktop or laptop also by registering yourself to the Unacademy site. Once you have done either of them, simply go to manage goal section and select your goal, which is NEET PG, and then inside of NEET PG select plus and get subscription. As simple as that. Now प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेना है. माई रिकमेंडेशन इज टेक अ बिगर वन, लाइक 12 months और 24 months. बल्क सब्सक्रिप्शन है, काफ़ी डिस्काउंटेड ऑफर में आते हैं, आप कमिट हो जाते हो अपनी तैयारी करने के लिए, और लाइफ में हम जहाँ भी कमिटेड रहते हैं वहाँ पर हम अपना गोल अचीव करने के बहुत ज़्यादा पास होते हैं. सो माई रिकमेंडेशन इज बी कमिटेड. And second thing is, while you are taking the subscription,
do use my referral code which is DRSUMIT Dr. Sumit Live. ये रेफरल कोड आपको दिलाता है 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, और उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट करता है 36,000 फॉर 24 मंथ्स एंड 24,750 फॉर 1 ईयर। ये पेमेंट्स आप बहुत ही आसान तरीकों से कर सकते हो। इवन पे इन पार्ट्स इज अवेलेबल। सो जो भी तरीका आपके लिए सबसे सूटेबल है वो आप चूज कर लीजिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जल्दी आ जाइए अनअकैडमी के प्लस सेक्शन पे। अक्टूबर ऑनवर्ड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ courses are being launched, going progressively towards completion of the subject for medicine, surgery, radiology, pathology, forensic, microbiology, और आप कोई भी लाइव क्लास मिस नहीं करना चाहोगे, बिकॉज सूनर और लेटर in about 3 or 4 months time we are now expecting NEET PG 2021 to happen. So हमारे पास बहुत समय नहीं है, पर उतना समय है where a student can prepare very very well. आज की क्लास के लिए इतना ही। इस लेक्चर को अगर आपने लाइक किया या फिर आप इस चैनल से बंधे रहना चाहते हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को डिस्कस कीजिए, सो दैट lots and lots of your friends can come in and they can have the benefit of this free YouTube series. Okay, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है we are moving towards toxicology now, and all those students जो second year में भी हैं who are waiting to give their MBBS examination, it would be a beneficial talk for even them also. Okay, do remember that my referral code is DRSUMIT Live, and you can use this referral code to buy any subscription from an academy. You can share this referral code with anyone if he wants to buy anything from an academy, and it will avail 10% discount for them. चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम 12 बजे with yet another topic on toxicology. Till then, keep safe, keep practicing, and keep your family safe also in this time of pandemic. Bye bye. Have a very very good day ahead.